वालेकुम सलाम। सर मुझे टिप्स दे के मैं एडवांस और मैथ्स कैसे। वालेकुम सलाम। भाई जिनका अकाउंट्स का पेपर है एडमैथ्स के साथ या मैथ के साथ, आई डोंट नो, you know, just don't leave anything to the last minute. Try and make sure कि have everything memorized, solved, जो भी practice आप कर रहे हो, don't leave anything to the last minute. That's the best that I can say, and manage your time, you know, कोई भी time ज़ाया नहीं करें आप. Sir will in this video will give notes on integration or just past papers. इसमें हम past papers करेंगे, ठीक है, और integration भी हम सिर्फ area under the curve वाली करेंगे, ठीक है. नोट्स फिर मैं लेटर ऑन कहीं अपलोड कर दूंगा, बट बिकॉज इफ़ यू ट्राई एंड डू बोथ कॉन्सेप्ट्स और पॉसिबल्स, अगर दोनों एक ही स्ट्रीम में करने की कोशिश करते हैं ना, तो ज़रा प्रॉब्लम होती है. वालेकुम सलाम. आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. Difficulty level, I really can't say that. I really shouldn't say that. I can't say anything about that. ठीक है, but you know, it's best to prepare for the worst. हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ वाले ही क्वेश्चंस कराऊंगा अहमद, डोंट वरी अबाउट दैट. फंक्शंस की एक स्ट्रीम हम कर चुके हैं, एक और स्ट्रीम कर लेंगे सून इंशाल्लाह. ओके चलें, आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले ही ज़रा स्ट्रीम थोड़ी देर से स्टार्ट हुई है. सर टुमारो इज़ योर मैथ्स बी एग्ज़ाम. मैथ्स बी एग्ज़ाम, हाउ इज़ दैट? आप एड एक्सेल दे रही हैं? अच्छा, नवाल सर, कैन यू प्लीज़ गिव अस द एक्सप्लेनेशन टू फॉर इंटीग्रेशन? या ऑफ कोर्स, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन आल्सो. If your basics in AdMaths are not up to the mark, then it's best कि आप you watch conceptual videos. मैंने differentiation की कुछ conceptual videos बनाए हैं, you can watch that. Integration भी आप practice करो. वैसे तो you can always improve your concepts by doing past papers also. You know, keep looking at the notes alongside and so keep solving past papers. क्योंकि अब time बहुत short है. अगर आप पहले if you do concepts first and then if you do concepts first and then if you do past papers, then you're going to lose a lot of time. We don't have that much time.
What kind of graphs usually come in? Cubic आते हैं, exponential आते हैं, ln के भी आते हैं. But graphs part is the easy part. Don't worry too much about that. Okay. Two topics, two main concepts that you should be really focusing on are differentiation and integration. Needless to say, you know, आप खुद ही paper खोलें, you'll have an idea. So what do you think about advanced information? What do you mean advanced information? I'm not sure what do you mean by that. Acha, I'm about to start, guys. If you haven't liked the stream, I'd suggest please like the stream, and let's get started. Okay. So basically, I'm not gonna follow a specific order. Okay, I'm not gonna follow a specific order. I'm gonna try and make sure that I do the easier questions first. Okay. इसमें सारे questions compiled from 2016 onwards, ठीक है, 2015, 2016 onwards. So I'm going to look at the question, judge the difficulty level, and then solve it. ठीक है, like I said, I'm not going to follow a specific order. I'm going to do them by the difficulty level. ठीक है, the question that I feel is easy, मैं वो पहले कराऊंगा. The question that I feel that's difficult, उसको मैं बाद में कराऊंगा. ठीक है, so I hope we're clear on that, and let's get started. Okay, here we go. So this is a question from May June 2015, paper 2, variant 2. Okay, still very relevant, but like I said, May June 2015, paper 2, variant 2. So it says here, the graph of y is equals to x square minus 6x plus 10 cuts the y-axis at A. Okay. The graphs of y is equals to x square minus 6x plus 10 and y is equals to x plus 10 cut one another at A and B. Okay, we can see that. The line BC is perpendicular to the x-axis. That means it's a vertical line. Yes, I will save these streams. I've always saved these streams. So, live streams ka separate folder hai for maths and advanced. You'll find them there. Okay. Achha. Calculate the area of the region enclosed by the curve and the line AB showing all your working. Okay. So basically, technically, it's asking you for the area of the shaded region. Okay. The question could have also just said find the area of the shaded region, but the fact that it's saying the fact that it chose not to say that, in fact, it did say that calculate the area of the shaded region. ठीक है, it did say that. ठीक है, but उसने further आपको elaborate करके बता दिया कि कौन सा area चाहिए enclosed by the curve and the line AB. ठीक है. Now before this is an 8-mark question, so a couple of things that you guys need to keep in mind. Yes, 8 marks, Talha, exactly. Okay, now these are 8 marks that you can get very easily. If I'm honest, you can get these 8 marks very easily. Okay, you don't have to work too hard for these 8 marks. Okay, how many years should be done for AdMaths? At least 3 to 4 years. The more the better, but of course, if you're getting good marks consistently, then you should 3 to 4 years should be enough. Okay. No, we're not doing permutation and combination. I announced on my Instagram last night कि integration करेंगे. Okay, now let's focus on this and I'll address your queries later. So it says show all your working. Now make sure कि आप जो भी working कर रहे हैं, it's clear to the examiner. Now before in questions like these, please make sure that you do not have a head-on approach. Head-on approach से मेरा मतलब क्या है? Head-on approach से मेरा मतलब ये है कि don't start the working right away. Do some planning. Take 2 minutes. If it's an 8-mark question, so that means you need at least 2 minutes to do some planning. Okay. The more you plan, the better it is. The better structured your answer will be, and you'll have a better idea कि exactly इसको किस तरह से solve करना है. Okay, so the first thing that I need to do is, if I need to find out the area of the shaded region, the first thing I need to do is I need to find out the area of the trapezium. Okay, so whatever it is that I've highlighted in red basically means that I need to find out the area of trapezium. ठीक है? अच्छा. Then the next thing that I need to do is I need to subtract this blue region. Okay, whatever it is that I'm highlighting in blue, this is what I need to get rid of. Okay, so this is something I need to get rid of. And what is this? Whatever I've highlighted in blue is basically representing the area under the curve. Okay, remember, abhi I'm not using any values or anything like that. Okay, I'm just keeping it as simple as I can. Okay, and now I know मुझे इन दोनों को क्या करना है, मुझे इनको minus करना है. Area of trapezium minus area under the curve. ठीक है, अच्छा.
Now that we know exactly what it is that we need to do, ठीक है, now we know exactly कि हमें जाना किधर है, ठीक है, now that we know कि हमें जाना किधर है, that means we can now solve this question accordingly. Okay, now before I can find out any area, be it area under the curve or be it area of the trapezium, yes, this is the first question, Hassan, ठीक है. So before I can find out the area of the trapezium or before I can find out the area under the curve, the first thing I need are the values, ठीक है. अब ये values कहाँ से आएंगी? Yes, I can see that A जो है आपका is the point where the curve is cutting the y-axis, ठीक है. तो A की value तो मैं निकाल सकता हूँ, सही है. A की value मैं कैसे निकालूंगा? Let's have a look at the equation of the curve. The equation of the curve is y is equals to minus 6x plus 10. A is a point that is on the y-axis. That means A के coordinates कैसे होंगे? A के coordinates होंगे 0, y. Okay. So that means here's what I'm going to do. 0 का square minus 6 into 0 plus 10. So y किसके बराबर आ गया? Y बराबर आ गया 10 के. Okay. So what are the coordinates of A? The coordinates of A are 0, 10. Okay. Now that we know the coordinates of A, ठीक है, A का y intercept हमें पता चल गया. That means the next thing we're going to find out is basically the coordinates of B. अच्छा, अब मुझे बताओ कि B कैसे निकालेंगे? What point is B? Guys, quickly, what point is B? अच्छा, अभी किधर किसी ने बोला था A and B intersection of the curve and line. Yes, Saleh, your answer is correct. B के लिए मैं क्या करूँगा? I'm just gonna solve them simultaneously to find the coordinates of B. अच्छा, कौन सी equation simultaneously? The area of the equation of the curve, sorry, and the equation of a straight line, which is y equals to x plus 10. ठीक है. अच्छा, इनको simultaneously solve करते हैं. Obviously, I can't use elimination over here. The only method that I can use, the only method that I should use is the substitution method. So x plus 10 is equals to x square minus 6x plus 10. Now we have 10 on both sides, so we can just cross that out. Okay, let's get everything on the right hand side ताकि x square positive रहे. X square minus 6x is equals to 0. Okay, so what do you have? You have x square minus 7x is equals to 0. ठीक है, x is equals to y is equals to x plus 10. हाँ, x common लिया, x minus 7, सही है, equals to 0. So that means x is equals to 0. This point we already know, ठीक है, or x is equals to 7. अब देखो, if you have a tendency of making silly errors, I'd suggest कि before you move on to the next part, you check your answer यहीं के यहीं, ठीक है. So we have a quadratic equation x square minus 6x plus 10. Just make sure you've copied the question correctly. You have the equation of a straight line y equals to x plus 10. Make sure you've copied that correctly. Okay, so we've done all of that correctly. अच्छा, फिर what do we have? We have हमने उनको substitute किया, simultaneously solve किया. X square minus 7x equals to 0, x equals to 0 और x equals to 7. ठीक है. अच्छा, फिर next thing that we have is हमारे पास इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया. सो दैट मीन्स वी नो कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? वो 7 है. मतलब C इज़ बेसिकली 7, 0. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, ठीक है, B का भी हमारे पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट है ना. y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रिमेंबर y इज इक्वल्स टू x प्लस 10, सॉरी. सो दिस इज गोइंग टू बी 7 प्लस 10. दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 17. ओके, सो नाउ दैट वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, थिंग्स आर प्रीटी मच under our control now. ठीक है, अब हमारे पास सारे coordinates आ गए, things are under control. Now we're gonna start finding out the area. So now what I'm gonna do is I'm gonna find out the area of trapezium. And please make sure कि आपको जो space दी हुई है ना, आप उसको ज़रा सही से utilize करो, ठीक है. And if you guys are practicing yearly past papers, please make sure कि जब आप yearly past papers practice कर रहे हो तो आप बेहतर ये होगा आप उसको प्रिंट करके फिर करो, so that you get used to utilizing the space that's given. ठीक है, that goes for math and advanced and pretty much every other subject. So tell me, I'm confused, why are we taking area of trapezium? देखो, if you were thinking कि हम line को integrate कर दें within the limit 0 and 7, that's also correct. ठीक है, so if I read your question, that's also correct. Upper curve minus the lower curve, that's also correct. ठीक है, लेकिन it's just that कि line की integration से हम बच जाएंगे. ठीक है, coordinates of C are 7, 0. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं area of trapezium पे. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सही है. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लेंथ्स
टाइम्स हाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पैरेलल लेंथ कौन कौन सी होंगी? एक ये लेंथ होगी इसकी, ठीक है, जहाँ पे मैं ये डबल एरो बना रहा हूँ, ये 10 होगी, और एक ये लेंथ होगी जहाँ पे अगेन आई एम मेकिंग अ डबल एरो which is 17. These two are parallel lengths, and this right here is going to be the height, which is equal to what? Which is equal to 7. Okay, now let's see what happens. So ये हो जाएगा आपका area is equals to half into sum of parallel lengths, that means 10 plus 17, ठीक है, into the height which is 7. Okay, so let's work this out. 0.5 into, अच्छा listen guys, you must have noticed कि मैं आपके सवालों का भी जवाब नहीं दे रहा. I'd appreciate if you guys would leave those towards the end. Questions that are other than this, ठीक है, because if you want to be able to solve as many questions as possible, then it's best कि मैं आपके questions का बिल्कुल end में जवाब दूँ, ठीक है. I hope you guys understand and don't mind me doing that. Okay, तो ये basically आ रहा है हमारे पास क्या? ये basically आ रहा है हमारे पास 59.5, ठीक है. So 59.5 is the area of trapezium, ठीक है. Coordinates of C कैसे निकाले? Coordinates of C मैं बता देता हूँ. देखो, C is a point that's on the x-axis, right? And this line CB is a vertical line. If it's a vertical line, that means इसका x coordinate तो fixed होगा, x is 7. And as far as the y coordinate goes, since it's on the x-axis, इसका y coordinate जो होगा वो 0 होगा, ठीक है. How much time should we allocate to solving 8 to 10 mark questions? 10 minutes, 15, 10 to 12 minutes max, ठीक है. बस जो भी आप टाइम लगाएं, टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है. जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट सॉल्व इट, और फिर आपने एक दफ़ा सॉल्व करके ही फिर आपने रुकना है, ठीक है. बिकॉज इफ़ यू लूज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज एडवांस में थिंग्स आर सो मच सो कनेक्टेड, सो इंटरकनेक्टेड कि इफ़ यू लूज़ योर कॉन्सेंट्रेशन तो फिर होगा क्या, क्या भूल जाओगे कि आपने क्या निकाला है, आगे क्या करना है, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट area under the curve, ठीक है. अच्छा, अब area under the curve निकालने के लिए let's see, do we have all the ingredients? Well, we have the equation of the curve, yes. Do we have the limits? Yes, we do. Okay, so what I'm going to do now is I'm going to integrate the equation of the curve, ठीक है. I'm going to integrate whatever the equation of the curve is within the limits 7 and 0, ठीक है. That means कि मैं कर्व की इंटीग्रेशन, कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है. इसको हमने लिमिट्स इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 7 and 0. ओके, सो प्लीज़ यूज़ दिस स्पेस गिवन वेरी एफिशिएंटली. सो दिस इज गोना बी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस 10x. अब इसके नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लिमिट्स प्लग इन कर रहे हैं 7 and 0, ठीक है. अच्छा, अब I'm gonna plug in the limits. So 7 का cube is 343 if I remember correctly. Yes, 343 upon 3, सही है. Minus 6 upon 2, 3 हो जाएगा. So 3 into 7 का square which is 49 plus 10 into 7 which is I believe 70. अच्छा, 0 जब plug in करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है. So that means इसमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, ठीक है. अच्छा, नाउ इसको अब राउंडिंग ऑफ से बचने के लिए मैं सीधा कैलकुलेटर में डाल के एवेल्यूएट कर रहा हूँ. अच्छा, बाय द वे, आई होप यू गाइस आर अवेयर कि आप अपने कैलकुलेटर में अपनी इंटीग्रेशन का आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है. कैलकुलेटर में जो इंटीग्रेशन वाली की है ना, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आई पोस्ट इट अगेन ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा. तो प्लीज़ आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू गाइस यूज़ दैट फीचर, ठीक है. अच्छा, ओके, सो व्हाट आई एम लुकिंग एट ओवर हियर इज़ 112.3. अब देखो, अब हमारे पास, हमने शुरू में क्या सोचा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आ गया, एरिया अंडर द कर्व चाहिए, एरिया अंडर द कर्व भी आ गया, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द टू, ठीक है. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द टू. सो 59.5 माइनस 112.3. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. 59.5 माइनस 112.3. सो ये आ गया हमारे पास 59.5 माइनस 100 एंड, अच्छा ठहरो, लेट मी जस्ट चेक कि मैंने इंटीग्रेशन सही किया. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10. प्लीज़ यूज़ द कैलकुलेटर फीचर जिसके बारे में मैंने अभी आपको मेंशन करके बताया, ठीक है. आपको काम आएगा ये, ओके.
10 plus 17 into 7. ओके अच्छा, एक गड़बड़ ये हो गई कि हमने जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा है वो एक्चुअली 94.5 है, इट्स नॉट 59.5. ठीक है, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अलॉन्ग साइड मी कीप डूइंग दीज कैलकुलेशन सो दैट इफ आई मेक एन एरर और समथिंग यू गाइस कैन पॉइंट दैट आउट. ठीक है, ओके, सो नाउ व्हाट डू वी हैव 94.5 minus 112.3, so let's subtract 112.3, so we get the right answer, which is 343 upon 6. There you go. ठीक है, सैयद अहमद, आप 15 minutes से आपका क्या मतलब है? I'm not sure I understand. ठीक है, well if you're talking कि मुझे इसको सॉल्व करने में 15 minutes लगे, well that's because बेटा मैं साथ में एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूँ ना. ठीक है, I'm explaining it alongside. ठीक है, that's why it's obviously going to take me longer than how long you guys should take. ठीक है, anyway, so just to give you guys a quick run through, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को ज़रा क्लोजली स्टडी करना है. ठीक है, सो वी डिसाइडेड कि हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे बिकॉज दैट्स द बिगर शेप एंड फ्रॉम इट विल सब्ट्रैक्ट द एरिया दैट्स अंडर द कर्व. ठीक है, विच इज़ द वन दैट आई हैव हाइलाइटेड इन ब्लू. ठीक है, रेड से जो मैंने निकाला वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने से पहले हमें क्या चाहिए थे, हमें चाहिए थे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए. ठीक है, x values plug in करी in the respective equations to find out the y coordinates. So now that we have the y coordinates, सही है, फिर हमने क्या किया, फिर we have the exact values. सही है, हमने एरिया निकाला, area of trapezium. Please make sure you don't forget the formula for area of trapezium. Wrote that down. Worked out the area under the curve within the limit 0 and 7. Wrote that down. Subtracted the 2. अब देखो, क्योंकि हम ये सारी प्लानिंग कर चुके थे, so we knew exactly what we had to do. ठीक है, अगर हम हेड ऑन अप्रोच होती है कि you're not looking at what the question is asking for and you're not looking at how you're going to get there and you're just solving for the sake of solving. ठीक है, if you're just going to solve या integrate for the sake of integrating it, then आपको खुद भी वो confident feeling नहीं आएगी. आपको बस ये होगा कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ but I'm not too sure why I'm doing what I'm doing. Okay? Alright, so here's another relatively easier question. This is from May June 2016, paper 2, variant 1. ठीक है, and I'm going to solve this. So the first part says find the integral of 3x minus x to the power 3 upon 2. Okay, so ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x square. Remember power में एक ऐड किया, divide by the new power, minus x to the power 3 upon 2 plus 1 divided by 3 upon 2 plus 1 plus c. Okay, so let's see what do we get. इसको तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हो जाएगा 3 upon 2 x square ही रहेगा minus. Okay, sir, could we have done area upper line? Yeah, of course you could have done that. Yeah. Achha, so 3 divided by 2 plus 1 is 5 upon 2. X to the power 5 upon 2. Divide by 5 upon 2 plus c. अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना रहता है तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 3 upon 2 x square minus 2 upon 5 x to the power 5 upon 2 plus c. There you go. What do we have now? We have our integral. ठीक है, so how can we check our integration answers in calculator? Well, that depends on what calculator you have, but I don't know if you guys can see this clearly. It's basically ये वाली जो calculator में की है ना, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. ठीक है, I've made a separate video on it. मैं अपने YouTube पे जो post है ना उस पर डाल दूँगा. ठीक है, you guys can check it there. But you can use that, plug in the limits and plug in the equation of the curve that you want to integrate, not the integrated one, the equation that you want to integrate, and then the calculator will plug in the limits and give you the final answer. ठीक है, it's not going to integrate for you. ठीक है, वो आपको इंटीग्रेट करके उसमें लिमिट्स प्लग इन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वो आपको दे देगा. ठीक है, वो आपको इंटीग्रेटेड फंक्शन नहीं देगा. जो कैलकुलेटर्स इंटीग्रेटेड फंक्शंस देते हैं वो अलाउड नहीं होते. ठीक है, बिकॉज आई नो आप लोगों का फॉलोअप क्वेश्चन होगा कि ये कैलकुलेटर अलाउड है. येस, दिस कैलकुलेटर इज अलाउड बिकॉज इट ओनली गिव्स यू न्यूमेरिकल वैल्यूज, नॉट algebraic values. I mean, not algebraic expressions. Okay. Anyway. Okay. So this question says the diagram shows part of the curve y equals to 3x minus x to the power 3 upon 2, walaikum salam, and the lines y equals to 3x and 2y is equals to 27 minus 3x. So keep looking at the lines simultaneously so that you're aware of what's going on. ये आपकी line y equals to 3x, ये आपकी line 2y is equals to 27 minus 3x, and here's the curve that we, now notice करो कि the equation of the curve over here and the equation that whatever we found the integral of is the same. Okay. अच्छा,
find the coordinates of A. Let's see what exactly is A. So A can be worked out two ways. A is basically the point at which the curve and the line meet the x-axis at A. ठीक है? So if I want the coordinates of A, it's a no-brainer कि A के जो coordinates होंगे, they're going to be in the form of x comma 0. It's going to have an x coordinate, but the y coordinate is going to be 0. Okay? So what I'm going to do is, in the equation 2y is equals to 27 minus 3x, y की जगह 0, and solve for the value of x. So 27 is equals to 3x, which means x is equals to 27 upon 3, that's 9. Okay, so A के coordinates क्या आ गए? 9, 0. ठीक है? This is from May June 2016, paper 2, variant 1. किसी को क्या पता हम कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं? बेटा किसी को नहीं पता, ठीक है, but that's still not right, right? I mean, you're using something that's not allowed, so that's not something I'd recommend. Okay, and besides, if you get caught, then you'll be suspended for quite a while. Anyway, so A के coordinates आ गए, so let's label that 9, 0. ठीक है? अच्छा, then what do you want? Verify the coordinates of B are 3, 9. So this is a very nice question in the sense that it's making you work out everything that you need for the grand finale one by one. ठीक है? ये जो grand finale end में आएगी, find the area of the shade region, उसके लिए ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको वन बाय वन सारी तैयारी करवा रहा है आपको उसके लिए. ठीक है? अदर देन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने बस आपको पूरा उठा के रख दिया कि हाँ भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए. ठीक है? तो इसमें आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ा कि आपको क्या क्या चाहिए. सो क्वेश्चंस लाइक दीज वेयर एवरीथिंग इज जस्ट सॉर्ट ऑफ स्प्रेड आउट are nice in the sense that you know exactly by the time you get to the final part, you've already worked out everything that you need. Okay, now coordinates of B are 3, 9. B के coordinates के लिए I can see that B is the point where these two lines are intersecting. So obviously I'm going to solve them simultaneously. Y is equals to 3x and 2y is equals to 27 minus 3x. अब it's up to you whatever method you want to use. So कोई फ़र्क नहीं पड़ता. I'm just going to go with substitution because the equations are such that it's easier to use substitution. So 3 times 2 is 6x. 6x is equals to 27 minus 3x. Okay. So 9x is equals to 27. X is equals to 3. Y के coordinates निकालने के लिए go back to y equals to 3x. Plug in 3 in place of x. So y is equals to 9. So we can see indeed that the coordinates of B are 3, 9. Okay, so let's write that down over here also. आगे जाके हमें काम आएगा hopefully. कि B के जो coordinates हैं वो 3 and this right here is 9. ठीक है? Okay. Find the area of the shade region. Okay. Now, let's put our heads together. Let's do some planning. ठीक है? Before we find out the area of the shade region. Please, I repeat, I cannot emphasize enough on how you guys should not have a head-on approach. ठीक है? head-on approach का मतलब कि बस आपने सवाल पढ़ा और इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया. आपको नहीं पता कि आपने किसको इंटीग्रेट करना है पहले, किस में से क्या माइनस करना है, बस you're just integrating it क्योंकि इंटीग्रेशन का सवाल है या एरिया का सवाल है. ठीक है? Let's do some planning before we actually start solving it. Okay, so who's going to tell me कि किस में से क्या माइनस किया जाए? And please be specific. ठीक है? Specific किस समझ आ जाए, जिस तरह से आप एग्जामिनर को बता रहे हैं. ठीक है? इस तरह से आप मुझे बताएं. ट्रायंगल माइनस एरिया अंडर द कर्व. अच्छा, ट्रायंगल का नाम बताओ, कौन सा ट्रायंगल? Find the area of triangle. ठीक है, I can see that most of you have it figured out. Now I just want to know what triangle are you talking about? OBA, perfect. Good job, Ehsan. OBA is exactly the area of triangle that we're going to find out. ठीक है. अच्छा, अब एक काम करते हैं. Good job, everyone. Now I am going to take a screenshot of this. Okay. I'm going to copy it and paste it over here. Hello, Sir Saad. Hello, Halima. Okay. Now, so what you guys see in blue is the area of triangle. ठीक है. Halima, are you the city school wali Halima? Okay, so area of triangle. ठीक है, ये जो मैं कलर कोड कर रहा हूँ ये आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है.
I'm just doing it so that later on when you're looking at this PDF, you know exactly how it's done. Okay, and you don't have to watch the entire video for you to be able to understand कि मैंने क्या किया. Okay, and what I'm doing now in red is basically area under the curve. Yes, Fazan, you're right. Area under the curve. Okay, now whatever ingredients that we need, we already have them. Okay, thanks to this question, the parts that we solved previously, we already have exactly what we need to find out the area of the shaded region. Okay, now area of triangle. For area of triangle, yes, I will put a link to it after the live stream. I will do that. Don't worry about it. Okay, so area of triangle के लिए this is the base. ठीक है, ये base क्या हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी. ठीक है, और in case you're wondering, although I really hope you're not wondering कि कैसे 9 हुई, but in case you are, so you can see it's a horizontal line 0 से लेके 9 तक, the base is 9. Okay, what about the height? Who's going to tell me what the height is going to be? ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये area of triangle. Could you do another live stream in 6 hours? I am doing another live stream at 7:30, but that's for math. Yes, the height is going to be 9. Good job, guys. ये आपकी height है. ठीक है. So area of triangle is half times base times height. ठीक है. Which means area is equals to half into 9 into 9. 9 times 9 is 81. 81 upon 2 is 40.5. ठीक है. I'd appreciate if you guys just keep on checking जो मैं साथ साथ कर रहा हूँ ताकि अगर कोई calculation error कर दिया, you guys can point out. We'll save some time. Okay. All right. What's next? Next is area under the curve. ठीक है. Area under the curve. Okay, now in order to find out the area under the curve, we again we have the equation of the curve, we have the limits. Okay, two things, these are the two things that you need. So 3x minus x to the power 3 upon 2. In fact, we have another thing, and that is हमारे पास तो इसका integral भी है. We already have the integral, right? So we're going to use that except for the c part. Okay, so I'm just going to be lazy and copy this. Too bad you guys can't do this, but yeah, fair. कोई बात नहीं. Okay, so I'm going to use these, use this answer and plug in the limits 9 and 0. Yes, good job, Naeem. So let's plug in the limits one by one. Please make sure that you show examiner every piece of working that you do and कोई भी चीज़ doubt में ना छोड़ना please. Okay, minus the lower limit. अच्छा, lower limit अगर हम हाँ lower limit की बात करें तो lower limit 0 ही आएगी. ठीक है, so इसको हम हाँ सीधा 0 लिख लेते हैं. ठीक है, and once I've done it manually, I'm actually gonna use my calculator and make sure कि यही आंसर आ रहा है. Okay, so 9 square is 81. 81 into 3. Well, it's best that I use a calculator for this. So ये हो जाएगा हमारा 121.5. ठीक है, minus 9 to the power of 5 upon 2. ठीक है, that's 243 into 2 divided by 5. So that's 97.2. ठीक है. Okay, what do we have now? We have the area under the curve. अच्छा, अब मैं इसको so I'm going to work it out first. 121.5 minus 97.2. ठीक है, so ये मेरे पास आ रहा है क्या? ये मेरे पास आ रहा है 24.3. ठीक है, but to be on the safe side, I'm going to use my calculator and I'm going to plug in this equation as it is, not the integrated one, the pre-integrated one, the equation of the curve. ठीक है, और मैं अपना आंसर चेक करूँगा. ठीक है, just so that I'm confident that I've done it correctly, and I would encourage you guys also to do the same. अगर आपके पास एक calculator है जिसमें ये feature है तो please उस feature का पूरा फ़ायदा उठाएं. Otherwise there's no point in using such an expensive calculator. Okay, so yes, 24.3 is the answer. ठीक है, अच्छा, so that means I've done everything correctly. Now it's just to put the final piece of the puzzle, and that is आपने area minus करना है. Area under the triangle minus 24.3. Okay, let's work this out. So 40.5 minus 24.3. So the answer is indeed 16.2. And I've written the answers in this PDF over here ताकि आप लोग भी साथ साथ इसको check करते रहो. ठीक है, so there you go. The answer is 16.2. Sir, thank you. You're an absolute lifesaver. Yes, you're welcome. Sir, आप A-level maths सिखाते हैं YouTube पे? I don't have much content on A-level maths. A-level maths पे there are other good channels such as Zenomatics. Zenomatics पे you'll find a lot of
good A-level content, AS A2. Okay, so yeah, if it's A levels, AS level you're looking for, then you won't find much content on my channel. Maybe coming year में मैं बनाऊंगा, but in the meantime you can use Sir Zain's channel. Okay, sir ये question करवा सकते हैं please? Didn't I just do a question? अच्छा, आपने अलग सवाल पूछा है. You've asked October November 2020, question number 10. ठीक है. Is it area under the curve, Mohammed Shahir? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपका सवाल करवा दूंगा अभी. Whatever it is that I have planned, how about you let me get through that and then we'll do what you're saying. ठीक है. Okay, so that was I think a relatively more difficult question. ठीक है. अब मैं एक और question कराने लगा हूँ आप लोगों को. ठीक है. And that is, अच्छा, I just realized कि मैंने वो question यहाँ पे अधूरा copy किया है. ठीक है. It's from May June 2019. बहरहाल इसका नेक्स्ट पार्ट होगा एरिया अंडर द शेडेड रीजन. सो जस्ट गिव मी वन, या चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करके कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक का ज़रा सवाल देख लेते हैं. चलो ये करते हैं, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. वालेकुम सलाम अब्दुल्ला. Here's question number 9. Let's see, and this is from October November 2018, paper 2, variant 2. ठीक है. Fardeen, I'll come to your question also, don't worry. ठीक है. इसमें ना आपका ज़रा नॉर्मल वाली चीज़ भी यहाँ पे शामिल है. हाँ, अगेन दिस ऑल्सो इज़ अ नाइस क्वेश्चन इन द सेंस दैट इट्स सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड एवरीथिंग फॉर यू इंस्टेड ऑफ जस्ट स्ट्रेट अवे आस्किंग यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है. Maths P2 के लिए most recurring topics. Yes, I'll make a video on that. It's lined up. Don't worry. Videos like these require a lot of research and all that. So काफ़ी सारे papers खोल के देखने पड़ते हैं, questions देखने पड़ते हैं, फिर बनती है वो video. ठीक है. And alongside these live streams, it's kind of difficult to do that, but I will do that hopefully today. ठीक है. Anyway, so it says the diagram shows part of the curve y is equals to 2 square root x. The normal to the curve at the point A 4,4 meets the x-axis at the point B. So keep looking at the curve and the equation of a straight line and everything on the side. Everything that you're reading. Find the equation of the line AB. Okay. So how do we find out the equation of the line AB? What's the keyword? If I were to ask you guys and say कि इस पूरे उसमें, other than the key values, the equation of the curve or anything like that, tell me one important keyword which is kind of giving away everything that we have to do. Now I'm looking for a keyword. एक पूरे सवाल में एक keyword है. Yes, Ahmed, what you're saying is absolutely correct. Okay, but what's that keyword? You guys aren't answering my question. Normal to the curve, very good Fardeen. Normal is the keyword over here. ठीक है. That tells us exactly what we have to do. ठीक है. No, it's not the x-axis, it's normal. Yes, good job Arbeen. Okay, so अब normal to the curve. कैसे निकालेंगे normal to the curve की equation? Let's have a look. सबसे पहले हमारे पास equation of the curve है. Let's make it differentiation ready. When I say differentiation ready, I mean के power ऐसे लिख लो so that you can see exactly what the power is instead of having like a surd. Okay. Now we're going to differentiate it. So power gets multiplied by the coefficient of x and you take 1 away from the power. So this is what happens. So 2 and 2 get cancelled out. dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx हो जाएगा x to the power minus half. Half minus 1 which is minus half. ठीक है, let's write it nicely. So dy by dx हो जाएगा हमारा 1 upon root x. Okay. Now हमें equation of normal किस value of x पे चाहिए? हमें चाहिए x equals to 4 पे. Okay. So I'm going to plug in 4 in place of x. Now when I plug in 4 in place of x, so we have 1 upon root 4. So dy upon dx क्या हो जाएगा? dy upon dx हो जाएगा 1 upon 2. Okay. Now what do you guys think? 1 upon 2 इस लाइन का gradient, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लाइन आप देख रहे हो इसका gradient है 1 upon 2. So are you going to buy that? So 1 upon 2, sorry, not 2, 1 upon 2. Are you going to buy that कि इस लाइन का gradient 1 upon 2 है? Well, you shouldn't buy it for 2 reasons. Yes, the normal gradient is minus 2. Okay, what we have worked out, just so we're clear, what we have worked out is actually the gradient of this tangent. Okay, what we have worked out is actually the gradient of this tangent. Okay, the gradient of this tangent. Not that you don't have to, you have to write this, लेकिन मैं just for the sake of your understanding मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. The gradient of tangent is half, which means that the gradient of normal is going to be the negative reciprocal of the
gradient of tangent, so that means it's going to be -2. Okay. So the two reasons why you shouldn't buy that, one is obviously because कि ये tangent का gradient है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये आपका negative sloping line है, so it can't have a positive gradient to begin with, ठीक है. So that is why it's very important to keep your eyes and ears open while working, ताकि आपको instantly हो कि ये तो हो ही नहीं सकता because it's a downward sloping line, how come its gradient is positive, ठीक है. So that'll probably prompt you to check your answer and see what you've done wrong. Okay. Alright, so now that we have everything we need in order to find out the equation of the normal, let's find out the equation of the normal. Okay. So y minus y1 is equals to m x minus x1. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, gradient हमारा -2 है and the point through which the normal is passing is basically 4, 4. ठीक है. y minus 4 is equals to -2 into x minus 4. Okay. Y minus 4 is equals to -2x plus 8, which means y is equals to -2x plus 12. So there you go. What we have now is the equation of the normal, and that is the correct answer, thankfully. Okay, there you go. That's that. Find the coordinates of B. Okay, coordinates of B is a no-brainer. Coordinates of B अगर आपको चाहिए तो है y equals to -2x plus 12. ठीक है. So y is equals to -2. अच्छा, b के पहले ज़रा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0. ठीक है. So I'm going to plug in 0 in place of y. 0 is equals to -2x plus 12. That means 2x is equals to 12, which means x is equals to 12 upon 2. That's 6. And now we have the coordinates of b that are 6, 0. ठीक है. So far I think smooth sailing. So yeah. Showing all your working, find the area of the shaded region. Okay, now it's time for the grand finale. Area of the shaded region. Kind of expected. ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन देखे ना, you should be expecting कि वो आपसे area of shaded region, rather be mentally prepared कि it's going to ask you for the area of the shaded region. Okay, so we have the coordinates of B. Let's write them down. 6, 0. ठीक है. और हमारे पास ये इनका point of intersection भी निकालने की ज़रूरत नहीं है. Thankfully the question has already given us what that is. Okay, this value is 4. Okay. Now I want you guys, all of you, to put your heads together and tell me how exactly are we going to find out the area of the shaded region. Okay, take your time. Take 2-3 minutes if you have to. I think only area under the curve मालूम करना है. ठीक है, that's a good start, Mohammed Shahir. Area of triangle plus area under the curve. Yep, that's absolutely correct. दोनों को ऐड करेंगे. Good job. Okay, अच्छा, one more question guys. When we're integrating the equation of the curve, what limits are we going to take? Quickly. When we're integrating the equation of the curve, what limits are we going to take? मैं इस stream का link तो share करना भूल ही गया. जल्दी से बताएं तो मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ. 0 and 4, that's absolutely correct. 0 and 4. ठीक है. So please follow this method. ठीक है. I mean it's not exactly like a golden rule or something. ठीक है. Common sense की बात है. जितना आप अपने क्वेश्चन में प्लानिंग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है. ठीक है. Okay. So now let's begin. ठीक है. Let's start solving this. अच्छा, इसको भी ज़रा हम कोशिश करते हैं कलर कोड करने की. So blue से जो भी मैं working करूँगा, I'm going to do that for the area under the curve. ठीक है. Area under the curve. Area under the curve. Okay. And whatever working that I do in red, that will be for area of triangle. ठीक है. That's going to be for area of triangle. अब देखो ये again this question is very nice in the sense that it has made us work out everything before we get to the final part. Okay, so let's start by figuring out the area under the curve. ठीक है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, और लिमिट्स क्या रखेंगे, 0 and 4 as you guys suggested.
2 to the power x. Now let's make it integration ready. When I say integration ready, I mean कि power को ऐसे लिखो so that it's easily integrated. Okay. Limits are 4 and 0 with respect to x, although you don't need to write that, but yeah, you know, just looks nice. Half plus 1 over half plus 1. ठीक है. और इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे क्या 4 and 0. लिमिट्स लगाने से पहले ज़रा लेट्स राइट दिस नाइसली. हाफ प्लस 1 इज़ 3/2. 2 को ज़रा डिवाइड करो 3/2 से तो ये हो जाएगा 4/3. ठीक है. सो दैट मीन्स दिस इज़ 4/3 x to the power. Can't we find area of trapezium and subtract it from area under the curve? Trapezium. What trapezium are you talking about? I don't see any trapezium. Oh, acha. If you're talking about ठीक है फरदीन मैं अभी आपके उस पे आता हूँ. ठीक है. ठहरो. हाफ प्लस 1 3/2 within the limits 4 and 0. Okay, so now I'm going to plug in the limits. 4/3, 4 to the power 3/2, 4 to the power 3/2. ठीक है. ये आपकी अपर लिमिट हो गई. इसमें से हम माइनस करेंगे लोअर लिमिट. लोअर लिमिट प्लग इन करोगे 0 तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली लेट्स वर्क दिस आउट. 4/3 ब्रैकेट में लिखा 4, पावर लगाई, पावर में लिखा 3/2. सो ये हो गया हमारा 32/3. ठीक है. सो व्हाट वी हैव दिस टू बी इक्वल टू 32/3. ओके. नाउ दिस इज आंसर इज 44/3. अच्छा, इसका आंसर पता नहीं कहाँ लिखा है मैंने. इसका आंसर मैं लिखना भूल गया. यहाँ पे पता नहीं 4/3 x to the power 3/2. अच्छा, ये आंसर इसका अधूरा लिखा हुआ है, सिर्फ इंटेग्रल लिखा हुआ है. ठीक है. लेट मी चेक, लेट मी सी. इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रायंगल. लेट्स वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल. अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे बताओ बेस हम क्या लेंगे. ये हम बेस लेंगे. इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल. सो ये बेस है और ये हमारी हाइट हो गई. ठीक है. हाइट हमारी 4 हो जाएगी. सही है. लेट्स वर्क इट आउट. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट. सो बेस इज 2. ठीक है. बिकॉज 4 से लेके 6 तक है तो बेस 2 होगी. ठीक है. एंड द हाइट इज़ 4. सो 2 और 2 कैंसिल हो गया. दैट मीन्स एरिया इज इक्वल्स टू 4. So now we're just gonna put all this together. Do 32/3 minus 4. So now we have area of the shaded region. Let's see. Answer is 44/3. अच्छा प्लस करेंगे. सॉरी. हाँ. 32 divided by 3 plus 4. Yep, 44/3. There you go. Okay. So this was a good question in the sense के it's not always अपर माइनस लोअर. ठीक है. अच्छा फरदीन, आपने जो चीज़ स्पॉट की थी वो बेसिकली आप इस ट्रेपीजियम के बारे में कह रहे हो ना, जो कि हमें खुद ही बनाना पड़ेगा. लेकिन उसमें से जब आप एरिया अंडर द कर्व माइनस करोगे तो फिर आपको पता है लिमिट्स कौन सी लेनी पड़ेंगी. आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और आपको वाई की लिमिट्स लेनी पड़ेंगी. ठीक है. आई वुडंट रिकमेंड दैट. ठीक है. बट what you're saying is not completely wrong or completely irrelevant. It can be done like that, but I wouldn't recommend that because फिर आपको बहुत सारे changes करने पड़ेंगे. आपको लिमिट्स y की लेनी पड़ेंगी 0 and 4 और फिर आप किसको इंटीग्रेट करोगे? आप पहले x को सब्जेक्ट बनाओगे और फिर इंटीग्रेट करोगे. ठीक है. It can be done like that. ठीक है. Will I recommend it? No, I will not recommend it. ठीक है. अच्छा, अब ज़रा थोड़ा लेवल अप करते हैं और थोड़ा मुश्किल सवाल करते हैं. क्या ख्याल है? What do you guys suggest? थोड़ा मुश्किल सवाल करें. This question looks really nice. एक तो ये स्पैमर फिर आ गया. Hide user on this channel. Okay. ठीक है. चलें, लेट्स डू अ डिफ़िकल्ट वन. दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. सही है. अच्छा, इसके आगे आपको एक ब्लैंक पेज दिया हुआ था. ठीक है. तो मैं भी ज़रा इसके आगे एक ब्लैंक पेज लगा देता हूँ. बल्कि लाइन लगाते हैं. दैट लुक्स नाइस. ओके. हाँ, अब देखो
Part 1 is very simple. ठीक है, again this question also is step by step preparing you for what is to come. ठीक है, और वैसे हो सकता है यही वर्किंग यही स्पेस जो है काफ़ी हो. इट्स अ 9 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, इट्स अ फेयरली रीसेंट paper and it's also a 9 mark question. 2020 में if you guys well you guys wouldn't know or maybe you do, 2020 में ना इसके एड मैथ्स का सिलेबस चेंज हो गया था एंड पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया था. ठीक है, सो या okay, here's question number 10 part A. It says show that 1 upon x plus 1 plus 2 upon 3x plus 10 can be written as 5x plus 12 upon 3x square plus 13x plus 10. Yes, this question is scary. Okay, this is a scary question. No denying that. Lekin just because it's scary doesn't mean that it's unsolvable. Okay, it's still solvable. So करते हैं step by step. ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं. Let's do it step by step and हो जाएगा solve. क्यों नहीं होगा? ठीक है. Okay, so show that. Well, this we can show very easily. इसका LCM लेते हैं. So LCM होगा x plus 1 times 3x plus 10. सही है. So इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 3x प्लस 10 से, इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 3x प्लस 10 से. खैर ये सारे बेबी स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. ठीक है, अच्छा इसको ज़रा थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं. ओके, एंड देन प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से एंड होपफुली इफ़ यू डन एवरीथिंग करेक्टली देन सही आंसर आ जाएगा हमारा. सो 3x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 2 ओवर लेट्स एक्सपैंड दिस. सो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 1 टाइम्स 10 विच इज़ 10. ठीक है, सो 3x प्लस 2x इज़ 5x, 10 प्लस 2 इज़ 12, 3x स्क्वायर एज इट इज़, 10 प्लस 3 इज़ 13 and 10 as it is. Okay, so ये हो गया हमारा 1 mark, 1 free mark. Okay, the answer is right in front of us, so we know for sure that we've done it correctly. So अगर हम एग्जामिनर की कंडीशनल फॉर्म में आंसर ना दें तो मैक्सिमम मार्क्स कितने काटेगा? 1 मार्क तो फॉर श्योर काटेगा. ठीक है, इफ़ द एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड यू टू गिव द आंसर इन अ सर्टेन वे देन यू नो ही इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू गिव यू अ मार्क फॉर दैट, अ मार्क और 2. ठीक है, सो 1 मार्क फॉर श्योर गॉन. ओके, नाउ here's part B. Part B says the diagram shows part of the curve. Okay, so this is the part of the curve. So yeah, and the line x is equals to 2. So this is the line x is equals to 2 that you're looking at, and a straight line of gradient 1. So this line that you're looking at has gradient 1. So make sure to read the question carefully because the gradient is given to you in words. It's not written on the diagram. The curve intersects the y-axis at the point P. So you can see that the curve is intersecting at the y-axis at point P. The line of gradient 1 passes through P and it intersects the x-axis at the point Q. Okay, so the line is passing through P and at the same time it's intersecting the x-axis at the point Q. Find the area of the shaded region, giving your answer in the form of A plus 2 upon 3 ln B under root 3. Okay, so we have to give an answer like this now, guys. We don't have any other option. We have to give our answer like this. If the question has asked us to give our answer a certain way, then even if our answer is correct and has the same value as this over here, but if you haven't given it the way the question wants us to, then we're not going to get any marks. And this is a 9 mark question. So let's start. Okay, now let's do some planning first. Okay, now I want some input from you guys. What are the areas we should find? Where is the shaded region? Well, the entire thing is shaded. Okay, so I want some suggestions, some input from you guys. What? It's all white? Is it? Is it all white? No, I can see shaded दिख तो रहा है. Area of triangle, ठीक है. Plus, अच्छा, there is no trapezium. Please make a note of that. This is not a trapezium. Okay, whatever I'm outlining in blue, this is not a trapezium. Not a trapezium. Why it's not a trapezium? Because trapezium is made from straight lines and this curved length just ruined it because like I said it's not a straight line. Okay, so that's out the window. Acha, no it's not. पहला तो triangles सही है. Trapezium का मैंने जवाब दे दिया. Triangle POQ, that's good. Plus area under the curve, limits of P. So 0 हो जाएगा basically. Limits of 0 and x equals to 2. ठीक है, so most of you
have given the correct answer. I think most of you have figured it out. That's great. Okay, let's try and color code this also. So whatever it is that I'm going to do in blue. Okay, in fact, even before that, so we've decided कि हमने क्या करना है, हमने करना है area of triangle plus area under the curve. ठीक है, this is what we need to do, right? So let's write that down. Area of triangle plus area under the curve. ठीक है, now that we know exactly what it is that we need to do, let's move on. Okay, so whatever it is that I'm going to do in blue is going to be for the area of triangle. Okay, and whatever it is that I'm going to do in red is going to be for area under the curve. ठीक है. Okay, I'm good, alhamdulillah. Let's copy this and let's paste it over here. अच्छा, अब area of triangle निकालने के लिए पहले तो देखते हैं, do we have all the appropriate ingredients or not? I don't think we do. I think there's something missing. So area of triangle निकालने के लिए I need to, yes I have the gradient, okay. I know P का x coordinate जो होगा वो 0 होगा. I know Q का y coordinate जो होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा. ठीक है, but that doesn't help, does it? So that means what I need to do is I need to one by one find out these points. ठीक है. अब P निकालने के लिए what can I do? P is the point where the curve is cutting the y-axis. So that means I can simply plug in 0 in place of x, ठीक है, and find out the coordinates of P. Okay. So P जिसके coordinates 0, y हैं, ठीक है, उसको मैं equation of the curve which is 5x plus 12 over 3x square plus 13x plus 10. इसमें मैं x equals to 0 रख करूँगा, ठीक है, ताकि मेरे पास P का y coordinate आ जाए. Yes, Saad. So 5 into 0 is 0, 0 plus 12 is 12. जगह कम है तो ज़रा जो चीज़ें हम आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं उसको आसानी से फिगर आउट कर लेते हैं. 0 plus 0 is 0, 0 plus 10 is 10. So that means the y coordinate is 1.2. ठीक है, 1.2 कर लो, फ्रैक्शन फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो, that's up to you. ठीक है, now we have the y coordinate of P. ठीक है, so I'm just going to write the y coordinate here, 1.2. ठीक है. So that means what I can do now is I can find out the equation of, yes, 6 upon 5 or 1 upon 2. I can find out the equation of the line QP. ठीक है, वो कैसे? अच्छा, अब I'm going to continue from here, huh? Equation of line PQ is going to be y is equals to 1x. अब because I know what the y-intercept is, ठीक है, तो मैं straight away उसको 1.2 लिख रहा हूँ. ठीक है, I know what the y-intercept is, right? So बजाय इसके I do y minus y1 is equals to mx minus x1. I know that the straight line equation is y equals to mx plus c. I know that c is 1.2. I know that m is 1. So I'm just going to plug in m as 1 and c as 1.2 and form an equation. Okay. Now in order to find out the coordinates of q, I'm going to plug in 0 in place of y. So 0 is equals to x plus 1.2. ठीक है, वैसे तो अगर उसका gradient 1 है, just so you guys know, if its gradient is 1, that means whatever value at which it's cutting the y-axis, उसी value पे वो x-axis को भी cut करेगी. ठीक है, सिर्फ sign का फ़र्क होगा. ठीक है, so x is equals to minus 1.2. ठीक है, मैथ्स पेपर 2 की स्ट्रीम आज रात में है. we're doing mensuration, so tune into that. So we have this value also, and this value is minus 1.2. Okay, now let's find out the area of triangle. Area of triangle is going to be half times base times height. ठीक है, बेस जो आप देख रहे हो ये लेंथ होगी. प्लीज़ इट्स गोना बी पॉजिटिव. येस आई नो द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव बट बेस इज अ लेंथ, सो दैट मीन्स इट्स गोना बी पॉजिटिव. एंड हाइट इज गोना बी दिस लेंथ विच विल ऑल्सो बी 1.2. सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 1.2 times 1.2. So let's work this out. 1.2 times 1.2. Please make sure आप लोग मेरे साथ साथ ज़रा कैलकुलेशन करते रहो, so that if I make an error or something you guys can point it out. So area is equals to 0.72. ठीक है, area of what? Area of triangle. Okay. अच्छा, अब बारी है किसकी? अब बारी है area under the curve की. ठीक है, area under the curve is something that is going to be quite, well, maybe not. Let's see. ठीक है, अभी से ओपिनियन नहीं बनाते कि चैलेंजिंग होगा नहीं होगा. ठीक है, अगर हो गया आसानी से तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पे जगह बना रहा हूँ और इसका आंसर को मैं इधर ड्रैग कर रहा हूँ. ओके, ना
अब एरिया अंडर द कर्व के लिए, ठीक है, what do you guys suggest? Do I integrate this equation as it is, or is there something else I should be doing? What do you guys suggest? Have a look at part A also. ठीक है, and now tell me, what should I do for area under the curve? Yes, the partial version, yes. So basically, I cannot integrate this equation the way it is. Well, I could have been able to, अगर पता है क्या होता, had the differential of 3x square plus 13x plus 10 already been somehow present in the numerator, okay, then I would have been able to integrate this by using ln, okay. But since that's not the case and I can never add or subtract something, I can always multiply and divide it by in order to bring it equal to the differential. So that means I'll have to integrate this version, okay. Achha, how do I integrate this version? Well, now that we have figured out what to integrate, let's one by one see how exactly are we going to integrate it. So we're going to integrate 1 over x plus 1 plus 2 over 3x plus 10. 2 over 3x plus 10. Okay. Achha, this is what we're going to integrate within the limit, with respect to x, within the limits 2 and 0. Okay. Now be very careful about the integration part over here. 1 over x plus 2 को तो हम बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, x plus 1 सॉरी 1 over x plus 1 तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा. सिर्फ ऐसे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द फर्स्ट वन. नो, यू कांट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विदाउट द हेल्प ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक है, ओके. सो नाउ दैट आई एम इंटीग्रेटिंग दिस, इसको ज़रा आप एक काम करो, इसको आप सेपरेटली चाहो तो इंटीग्रेट कर लो. ठीक है, अच्छा, आई एम जस्ट गोना स्टिक टू ब्लू एक्चुअली, नॉट गोना चेंज टू रेड. ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x plus 1 is actually going to be very simple, because x plus 1, the differential of x plus 1 is already in the numerator, so that means it's going to be ln x plus 1 straight away. Okay, 3x plus 10 है. oh thank you, आपने बता दिया 3x plus 10 है, नहीं तो अभी पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता. Thank you Aziz Ahmed. Okay, now next thing is, how do I integrate 2 over 3x plus 10? What do I do? What do I do with this? सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सी डायरेक्ट इंटीग्रेट होनी है, कौन से ऐसे तरीके से? ओके, so Abu Bakr, the answer to your question is, see if you can integrate this equation directly. Okay, well, you can't. When would you have been able to integrate this directly? Had the differential of the denominator been already in the numerator. Okay, since that's not the case, so that means अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ओरिजिनल फॉर्म में वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा. सो कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, हाउ विल आई इंटीग्रेट दिस? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना, यू विल हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. वो कैसे? अब ज़रा प्लीज़, आई वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो माय वर्किंग, एंड देन वंस आई एम डन, देन यू गाइस कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ठीक है, सो सबसे पहले तो आप एक काम करो, गेट दिस टू आउटसाइड. ओके, नाउ इन फैक्ट आई वोंट स्विच टू रेड, आई एम गोना स्विच टू ग्रीन. ओके, गेट दिस टू आउटसाइड, सो दैट मीन्स नाउ यू लुकिंग एट 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3x plus 10. Now before you can integrate this, you have to first of all make sure that the differential of the denominator is already present in the numerator. Now the differential of the denominator 3x plus 10 is going to be 3, and in the numerator we have 1. So that means we have to do some tweaking. अब वो tweaking क्या होगी? वो tweaking ये होगी कि सबसे पहले तो हम 1 को 3 के बराबर लेकर आएंगे by multiplying it by 3. Now if I've multiplied the numerator by a value of my own, that means I need to offset the effect by dividing it by the same value. Okay, that means अगर मैंने into 3 किया तो मुझे बाहर into 1 upon 3 करना है, which is kind of the same thing as dividing by 3. Okay, now then what happens is, this becomes 2 upon 3 integral of 3 over 3x plus 10, which is equal to what? Which is equal to, ठीक है, अब I'm writing down the final integral over here. ठीक है, I'm making a dividing line over here. That's going to be 2 upon 3 ln 3x plus 10. Yes, I can see most of you have given the correct answer. Shifa, Suhaila, Ahmed, your answer, I think you check your answer. ठीक है, but most of you I can see have given the correct answer. Hani, आपने भी सही answer दिया. ठीक है, but I just wanted to show you guys the step by step procedure of doing that. Okay, so now we know exactly इसका integral क्या है. ठीक है, इसका integral क्या है? इसका integral है ln x plus 1 plus 2 upon 3 ln
3x plus 10. Now this is the function in which I'm going to plug in the limits 2 and 0, okay, and then let's see what happens. So ln 2 plus 1 is going to be ln 3 plus, let's see, what do we have, 2 upon 3 ln 3 into 2 is 6, 6 plus 10 is 16, okay, so yeah, minus ये upper limit आ गई. अब lower limit में देखते हैं क्या सीन है. So ln 0 plus 1 is going to be ln 1, okay, plus 2 upon 3, 3 into 0 is 0, and 0 plus 10 is going to be ln 10, so plus ln 10, okay. Okay, now let's start simplifying this. Be very careful not to skip a step and not to make a calculation error. So ln 3 plus 2 upon 3 ln 16 minus ln 1 किसके बराबर होता है? In case you didn't know, remember log जिसका argument 1 है is going to be 0. ठीक है, भले ln हो भले lg हो, whatever, as long as the argument is 1 is going to be 0. So you can explain the second last part of integration, the one in purple. Yes, I will do that. ठीक है, first let me get through this. Minus ln 1 which I said is going to be 0, ठीक है, minus 2 upon 3 ln 10, ठीक है. अच्छा, अब देखें ज़रा सब के सब, वो क्या मैं बता रहा हूँ, वो ये क्या है. अच्छा चलो, first let me explain this, ठीक है. So in this, here's what we did. सबसे पहले we got this 2 outside, so this is what it became, whatever I've written in green, 2 into 1 upon 3x plus 10, ठीक है. Then the differential of 3x plus 10 is going to be 3, so we have to make sure that 3 is somehow present in the numerator, for which I've multiplied the numerator by 3, and since I've multiplied the numerator by 3, that means I need to divide it by 3 also, ठीक है. Into 3 क्या और into 1 upon 3 क्या basically, ठीक है. So ये 2 upon 3 integral 3 over 3x plus 10 हो गया. Now this can be integrated directly because 3x plus 10 का differential, which is 3, is already in the numerator, so I just need to write ln and the denominator, and that's it, we've integrated it. And don't forget that you have a 2 upon 3 from before. Okay, now hopefully that's clear. If not, then let me know. वैसे तो I hope के clear हो गया होगा. Okay, so now this becomes ln 3 plus 2 upon 3. अब आप एक काम करें, you take 2 upon 3 common, ठीक है, and then what will you have? You'll have ln 16 minus ln 10, ठीक है. अब ln 16 minus ln 10 का मतलब क्या? ln 16 minus ln 10 का मतलब कि ln 1.6, ठीक है. 1.6 कह लो, या इसको सिंप्लीफाई करके करना है, सिंप्लीफाई करके कह लो, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं. 16 divided by 10, ठीक है. So 16 upon 10, okay. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके साथ साथ log के rules अगर 50-50 हैं, so you guys can revise those also. So this becomes ln 8 upon 5, okay. Now this coefficient is going to become the power of 8 upon 5, okay. So I'm going to continue from here. So this is going to be ln 3 plus, okay, ln 8 upon 5 to the power of 2 upon 3, ठीक है. ln 8 upon 5 to the power of 2 upon 3, ठीक है. अच्छा, अब ज़रा साथ साथ एक काम करते हैं, ज़रा साथ साथ इसको भी देखते रहते हैं कि इन्होंने इसको लिखा हुआ किस तरह है, ठीक है. इन्होंने इसको इसी तरह लिखा हुआ है या इन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो ऑन द साइड, ठीक है. अच्छा, इसका जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है, हमें इसका आंसर किस तरह से दिया हुआ है, 18 upon 25 प्लस 2 upon 3. अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे देखते हैं इन्होंने यहाँ पे किस तरह से कहा है. यहाँ पे उन्होंने कहा है a प्लस 2 upon 3 ln b अंडर रूट 3. अब देखो, सो फार इट्स प्रीटी स्मूथ, ठीक है. प्रॉब्लम किसने कर दी? इस b अंडर रूट 3 ने प्रॉब्लम कर दी, ठीक है. सो फार इट्स एक्चुअली प्रीटी स्मूथ. एक काम करते हैं, लेट्स गेट द आंसर आउट ऑफ द वे, ठीक है. इस आंसर को सामने से हटाते हैं एंड लेट्स लुक एट दिस ओवर हियर, ठीक है. a प्लस 2 upon 3 ln b अंडर रूट 3, ठीक है. अब ये b अंडर रूट 3 को किस तरह से डील करना है, ये हमने देखना है, ठीक है. अच्छा, sir, you used the log rule, right? I think. So can you explain of putting coefficient as power? अच्छा, अब coefficient as power, I just realized कि हमें coefficient as power, I think बेहतर था कि हम ना लिखते coefficient as power, ठीक है. क्यों नहीं लिखते coefficient as power, ज़रा बताएं मुझे. वो हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें जो रूल दिया हुआ है, हमें जिस तरह से आंसर देना है वो क्या देना है, हमने देना है a प्लस 2 upon 3 ln b under root 3. किस तरह से हमने आंसर देना है, a प्लस 2 upon 3 ln b under root 3. So let's have that over here. इसको ज़रा अपने सामने रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे. a प्लस 2 upon 3 ln b under root 3. अब देखो, we're almost there, ठीक है, we're almost there.
लेकिन हमने क्या करना है, ज़रा हमने इसको 2/3 ln b √3 कैसे लेकर आना है ज़रा ये देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं ज़रा लॉग का रूल लगाते हैं, एंड सी इफ दैट हेल्प्स। इफ़ इट डज हेल्प दैट्स ग्रेट, इफ इट डजंट हेल्प वेल देन टू बैड, विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। अच्छा 8 to the power 2/3 देखते हैं, 8 to the power 2/3 is 4, ठीक है। एंड 5 to the power 2/3 देखते हैं, लेट्स सी व्हाट दैट इज, 5 to the power of 2 डिवाइड बाई 3, ओके वेल वो तो हमारा डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं ज़रा व्हाट यू गाइस सजेस्ट आई डू ओवर हियर, ठीक है। इसको देखो, ठीक है, एंड साथ साथ इसको भी देखो, ठीक है। ए तो हमारा फिगर्ड आउट है, ठीक है, ए वी नो इज 0.72, ठीक है, ए इज काइंड ऑफ फिगर्ड आउट, ठीक है। बट व्हाट डू आई डू विद दिस, इसका क्या किया जाए ज़रा सजेस्ट करें मुझे, पुट सम थॉट इनटू इट एंड देन टेल मी, ठीक है। हैव अ लुक एट द एंटायर वर्किंग आल्सो इफ यू वांट एंड देन पुट सम थॉट इनटू इट एंड टेल मी। What is integration by parts and integration by substitution? बेटा ये तो A2 में आती है, तो P3 में आती है, that's not relevant for this, ठीक है। In the meantime, I'd like you guys to answer my question, okay, how do I get this in this form? इसका जवाब दें मुझे आप लोग ज़रा। No Saad, I don't teach P3 M1 S1, ठीक है। अच्छा guys please ये वाले सवाल आप बाद में पूछिएगा, फर्स्ट आई वांट यू गाइस टू हैव अ गुड लुक एट दिस एंड टेल मी कि इसका क्या करें, ठीक है। वो तो हमने कर लिया ना, वो तो हमने कर लिया, दैट वी फिगर्ड आउट 8 to the power of 2/3, ठीक है, दैट वी डिड। व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप सुहेला, टेल मी माय नेक्स्ट स्टेप। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 2 की वीडियो आ जाएगी बेटा, होपफुली आज आ जाएगी। लाइक आई सेड इट्स अ वीडियो विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च, ठीक है। ओके देयर यू गो। Calculation error, I don't think I've made a calculation error somewhere, but yeah, feel free to point out if I have. ln x plus 1 डबल चेक कर लेते हैं, x plus 1 2/3, no I don't think I've made a calculation error somewhere. Why does it always have to be a spammer? चले, I'm gonna give you guys 2 minutes to figure this out, ठीक है। And if you figured it out, that's great. If you haven't, नहीं तो फिर मैं इसको solve करता हूँ, ठीक है। 2 minutes. What are the disadvantages if I drop admaths? But it depends what you're trying to pursue later on in life and how important it is for that. It entirely depends on that. नज़र नहीं आ रहा? Okay, there you go. Five to the power 2/3 is equals to 3 cube root to the power 5 square. So that means cube root of 25. Well, तब भी इस फॉर्म में नहीं आएगा, तब भी इस फॉर्म में नहीं आएगा। Multiply 3 with 8/3. Multiply कौन सा 3 with 8/3?
ठीक है शारिक, बताएं। It's integration. Okay, last minute guys, if you figure it out that's great. वैसे it is challenging, I should mention that. ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़रा outside the box सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन की नीट मीट करने के लिए. ठीक है, let me see if I can find the examiner report of this, और फिर हम ज़रा इसकी examiner report पढ़ते हैं और देखते हैं कि examiner report में क्या लिखा है. ठीक है, I teach at Nixer बेटा, I teach at Nixer O levels. 3 under root 3 into 16 upon 10. But that's what my question is. 3 under root 3 कैसे आया? Sir, ये a plus 2 under root 3 ln ये चीज़ area under the curve है या triangle का area? This is area under the curve. Area under triangle का area तो ये हमारा सीधा सा निकला हुआ है ना. Area of triangle तो अच्छा एक सेकंड, मैंने इसको सही से color code नहीं किया. ओहो, sorry, my bad. I should have color coded this red. ठीक है. खैर चलो, I can always change that. I can always fix that. ठीक है. There, fixed. Okay, अच्छा चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको. ठीक है, अब देखो बेसिकली I don't teach at Nixer College, I teach at Nixer O levels. ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें ना there's a lot of outside the thinking that's required over here. ठीक है, and I'll tell you what that outside of thinking, outside the box thinking is. ठीक है, इधर outside the box thinking जो required है ना आपकी, वो ये है कि if you have a look at over here, the thing is you cannot use a log rule over here. Yes, I will upload a PDF of this. Okay, now I want all of you to pay close attention because what's about to happen is something that, well, might surprise you. Okay, so you can't use a log rule over here. The reason why you can't is because you have 2 over 3 here and you don't have 2 over 3 here. Okay, so that means there's something that needs to be done. Okay, अब वो something क्या है, that is what we have to figure out. ठीक है, अब यहाँ पे log rule use करने के लिए you know what we have to do in order to be able to use a log rule over here, हमें यहाँ पे 2/3 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, now again like I said, pay close attention everyone because what's about to happen is something that doesn't happen too often. ठीक है, so हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2/3 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा अब how will I add 2/3? I can't just add it like that. Okay, I can't just add a 2/3 like that just because I want to. ठीक है, now if I've added a 2/3 over here, मुझे इसका इफेक्ट कैसे ऑफसेट करना पड़ेगा, मुझे इसका इफेक्ट ऐसे ऑफसेट करना पड़ेगा कि 3 पे जो पावर होगी वो क्या होगी, 3 पे पावर होगी इसका रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल क्यों होगी, 3 पे पावर होगी 3/2. ठीक है, नाउ व्हाई इज दैट, दैट इज बिकॉज कि जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, इवेंचुअली व्हेन दीज टू गेट मल्टीप्लाइड, कौन टू, व्हेन 3/2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2/3, whenever 3/2 gets multiplied by 2/3, what happens is that overall it becomes 1. Okay, notice how we make these modifications when we're solving logarithmic equations. Over here also we'll have to make this modification. Okay, now I'm explaining it again because it's tricky, it's difficult, yes, but still it's solvable. Okay, so here's what we're going to do. I'm going to explain it again one more time. So in order to make sure that since I have a 2/3 over here, in order to make sure that I have a 2/3 here also, मुझे यहाँ पे 2/3 ऐड करना पड़ेगा, I mean multiply करना पड़ेगा. ठीक है, but like I said, I can't just do it because I want to. Okay, and if I have done it, that means there is a responsibility to make sure that the overall value remains the same. And in order to make sure the overall value remains the same, that means I'm going to have to raise it to the power which is the reciprocal of whatever it is that I've multiplied over here. सबको समझ आ रही है ये बात या नहीं? Yes, it's difficult. I know आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा, बट चलो वो बात की बात है. एग्ज़ाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अभी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट आई एम यूजिंग हियर और नॉट. And even more important than the concept is the objective. The objective as to why I'm doing what I'm doing. Since I have a 2/3 here and I really want to simplify this log function, that means I need to have a 2/3 here also. And in order to have a 2/3 here also, that means I'm going to multiply it by 2/3, and the power that I'm going to put over here is going to be the reciprocal of 2/3. Why? So that when they get multiplied, the overall effect remains as if there's nothing happened. Okay? Ab note karo what happens. Now what happens is the following, that you're looking at 2/3 ln
3 to the power 3 upon 2. Now if you work out 3 to the power 3 upon 2, okay, let's work it out. 3 to the power of 3 upon 2, so that 3 cube हो जाएगा आपका 27, ठीक है, and ये हो जाएगा आपका 27 का square root, ठीक है, and square root of 27 is what? Work it out. Square root of 27 is 3 under root 3. चलो we'll do that in the next step, ठीक है, plus 2 upon 3 ln 8 upon 5. Now square root of 27, like I said, is basically equal to 3 under root 3. Now notice what happens. 2 upon 3 ln 3 under root 3 plus 2 upon 3 ln 8 upon 5. ठीक है, अब मैं यहाँ पे log का रूल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, log का रूल मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा, ऐसे यूज़ करूँगा, 2 upon 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट खोला, ठीक है, इनफैक्ट ln भी ले लेते हैं, ब्रैकेट खोला, 3 under root 3 into 8 upon 5, okay. Now let's simplify this. So what do we have? We have 2 upon 3 ln 8 into 3 is 24 under root 3 upon 5, and there you go. This is what? This is finally area under the curve. इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया area under the curve. Now just put it all together and do the final step, and the final step would be 0.72 plus 2 upon 3 ln 24 under root 3 upon 5, ठीक है, and since हमें fraction form में देना है, so 0.72 क्या हो जाएगा, 18 upon 25, although the question didn't say that anywhere, ठीक है, so that means we could have stopped there also, ठीक है, in fact you know what, let's stop over here also, क्योंकि question की ऐसा कोई requirement नहीं है, so we'll just leave it here only, ठीक है. Yes, this is well worth 9 marks. It was a really difficult question, yes. अच्छा, अब ना मुझे आप लोगों को इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ानी है, ठीक है. आई वांट टू शो यू गाइस द एग्जामिनर रिपोर्ट ओवर हियर, ठीक है. सो जस्ट हैंग इन देयर विद मी. व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? शुड वी डू वन मोर क्वेश्चन और कॉल इट ऑफ ओवर हियर? आई थिंक एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ट्रिग्नोमेट्रिक भी कर लेना चाहिए. ओके, सो दिस इज paper 22, paper 13, कौन सा क्वेश्चन था ये? I think this was question number 9. Oh sorry, this is October November 2021, ठीक है. अच्छा, hang in there. I want to make you guys read the examination report. No, it is 2020. Wait a minute. Just a second. 2020, paper 13, question number कौन सा है? अच्छा, question number 10 है, ठीक है. Okay, now I want you guys to read this with me, ठीक है, and इधर आपको ज़रा थोड़ी तसल्ली होगी ये पढ़ के, ठीक है. Okay, so it says here most candidates correctly calculated the area of triangle, but some were confused by the negative value of x at क्यूब. तो ये तो हमारे साथ नहीं हुआ, ठीक है. इधर वो बात करें किसकी? इधर वो बात करें कि उन्होंने बेस जो है वो पॉजिटिव की बजाय आई थिंक नेगेटिव ले ली होगी. Those tried to find the area of triangle by integration often used incorrect limits or an incorrect straight line equation. So now you guys probably know why I don't use that. जब एक shape बन रहा होता है तो I prefer that I use the area of that shape instead of integrating the line or whatever it is. जैसे अभी किसी ने थोड़ी देर पहले वो trapezium वाली चीज़ suggest की थी, nothing wrong with that, लेकिन उसमें chances of error ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. Many candidates did not relate the finding of the area under the curve to be previous part, and although they knew that integration was necessary, did not use 1 over x plus 1 over 2 over 3x plus 10 as suggested, ठीक है. So again very important कि ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसी equation को use करें if that equation can be written a certain way. So maybe by rewriting it that certain way you're able to integrate it correctly. Candidates who integrated correctly usually went on to use the limits correctly, but very few proceeded successfully from there. Most candidates found it difficult to incorporate ln3 into the final form. This is, I think, where all of you got stuck also, not appreciating that it could be written as 2 upon 3 ln3 under root 3. ठीक है, इन्होंने final version बता दिया, लेकिन उससे पीछे की क्या working थी मैंने आपको बताया
कि 2/3 ln 3 raised to the power the reciprocal of that, ठीक है. Most candidates found it difficult to incorporate ln3 in final form. Yes, as answers had to be exact and in the required form, it was necessary to show the manipulation of ln expression. See how it says it was necessary to show the manipulation, so that means you couldn't have skipped any working. Decimal answers from a calculator did not score working back from a decimal answer to the required form was not credited. Okay, so someone here abhi thodi der pehle was asking me ke what happens if I do not give the answer in the final form. So we'll find the answer in the last statement here. Decimal answers from a calculator did not score and working back from a decimal answer to the required form was not credited. So ये basically उनके लिए है जो आंसर देख के ना, अब आंसर देख के कैसे इनका मतलब है या पता नहीं, या मे बी इनका इससे मतलब ये है कि जिन्होंने अपने कैलकुलेटर से पहले आंसर निकाला, ठीक है, एंड देन दे ट्राई टू वर्क बैकवर्ड्स. यू नो हाउ वी लुक एट द करेक्ट आंसर एंड देन समहाउ प्लान और वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है. अक्सर आई एम श्योर आपने बचपन में किया होगा कि पहले आंसर देखा और फिर ऐसी वर्किंग कर दी जिससे वही आंसर आ गया. सो ये उन लोगों से मुखातिब है कि ऐसा करेंगे तो कोई मार्क्स की उम्मीद ना रखें, ठीक है. एनीवे, सो इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, गुड रिफ्रेशिंग क्वेश्चन, ठीक है. अच्छा, इसके साथ यू गाइस डोंट नीड टू बी स्केर्ड, देयर वाज अ ब्लैंक पेज गिवन, ठीक है, जस्ट दैट आई डिडंट कॉपी पेस्ट इट ओवर हियर एंड फॉर यू गाइस आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू यूज़ द ब्लैंक पेज, ठीक है. मैंने इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे कोशिश ख़त्म करने की कोशिश की, बट आप लोगों को मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा. एनीवे, सो लेट्स जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन आई थिंक, जहाँ पे हम ज़रा ट्रिग्नोमेट्रिक करते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन इंटीग्रेट करते हैं जहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ हो रही हो, एंड आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे ओवर देयर. अच्छा, ये एक सवाल है, दिस इज़ फ्रॉम May June 19 पेपर 1 वेरिएंट 2, ठीक है. इसका एक पार्ट है, लेकिन इसका अगला पार्ट आई कैन टेल यू इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेयर्ड रीजन. इनफैक्ट यू नो व्हाट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको एक सेकंड में ना इसके साथ लगा के, ताकि ये PDF अधूरा ना रहे, और फिर अपलोड कर देते हैं. May June 2019 paper 12. Okay, so downloads. In the meantime, I'd like to hear from you guys कि आपके इस क्वेश्चन के बारे में क्या थॉट्स हैं. एग्जाम में आता तो आप कर लेते. सेकेंड पार्ट मुश्किल था, ठीक है, लेकिन देखो दिस वाज अ 9 मार्क क्वेश्चन, राइट. सो अगर लेट्स से गॉड फॉरबिड आपसे एग्जाम में ये नहीं होता, सो दैट डज नॉट बाय एनी मीन्स दैट यू हैव लॉस्ट ऑल 9 मार्क्स. दैट मीन्स यू प्रॉब्ली यूज लाइक 2 मार्क्स मे बी, ठीक है, अल्लाह ना करे ऑफ कोर्स, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैक्सिमम यू लूज 2 मार्क्स ओवर हियर. सो डजंट मीन कि पूरा पेपर ही आपके हाथ से निकल गया और एनीथिंग लाइक दैट, एंड नो नीड टू बी डीमोटिवेटेड जस्ट बिकॉज यू कुडंट डू वन फाइनल बिट, ठीक है. सो या सर आपने O level कब किया था? I did my O levels in 2010. Yeah, 2010. Okay, now let's do this. Now first thing you should do before even starting this question is to make sure that your calculator is in radian mode. Okay, mine is in radian mode, if yours isn't, so do that right now, given that you're solving these questions with me. Acha, फिर over here it says find in terms of pi the x coordinate of P and Q. Okay, so how will I find out in terms of pi the x coordinate of P and Q? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेयर द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. नाउ यू नीड टू कीप अ बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन माइंड ऑल्सो, ठीक है. सो यू हैव y इज इक्वल्स टू 4 + 2 cos 3x, ठीक है, दैट्स वन इक्वेशन, एंड द अदर इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 5. ओके, अच्छा जी. सो 5 इज इक्वल्स टू, आई एम जस्ट गोना नंबर देम 1 and 2. 5 is equals to 4 + 2 cos 3x. 5 minus 4 is 1. 1 is equals to 2 cos 3x, which means cos 3x is equals to 1/2, ठीक है. अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ देखें, वो ये कि yes cos 3x is equals to 1/2 तक तो हम पहुंच गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे we'll use trigonometry, ठीक है. and trigonometry, before you use trigonometry you should be aware of trigonometric graphs, ठीक है, because it's important to keep the shape of the curve in mind before you can find out the area of the value of a and b, ठीक है.
अब देखो क्योंकि इसमें आप सिंपल कॉस इन्वर्स करके नहीं कर सकते. वाई कैन यू नॉट डू दैट? बिकॉज येस वन वैल्यू इज़ पॉजिटिव, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, एंड द अदर वैल्यू इज़ नेगेटिव. नाउ येस देर इज़ अ वे, because it's going to be symmetrical, okay, because it's going to be symmetrical, so you can work out one positive value and find out the other negative value by just multiplying it by minus. Okay, so basically इसके लिए हम क्या करेंगे, we'll do cos inverse of half, 3x is equals to cos inverse of 1 upon 2. So cos inverse of 1 divided by 2 is pi upon 3. So 3x is equals to pi upon 3. Now in order to find out the value of x, we'll divide pi upon 3 by 3. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pi upon 9. ठीक है. Now like I said कि since it's symmetrical, that means the positive value is pi upon 9 and the negative value is going to be minus pi upon 9. Okay, so hopefully that's clear. अच्छा, जो मैं ग्राफ वाली चीज़ बता रहा था, just to tell you guys, ग्राफ वाली चीज़ basically मैं ऐसे बता रहा था आप लोगों को कि cos का ग्राफ is like this. You should always know the basic shape of the graph, ठीक है, and it's like this also, ठीक है. Vectors we'll do later on. Vectors की एक, we have done one stream of vectors by the way, ठीक है. Yeah, so basically I was telling you guys that the graph of cos is basically symmetrical along the y-axis. Okay, so that means if this value is a, this value is going to be minus a. Okay, this is what I was telling you, but hopefully that's clear now. Sir, could it also have been 5 pi upon 9 instead of pi upon 9? Why would it be 5 pi upon 9? May I know that? Why would it be 5 pi upon 9? Please elaborate. Okay. Okay, so find in terms of pi the x coordinate of p and q. So p का x coordinate क्या है? P का x coordinate है pi upon 9, 5. ठीक है, वैसे x coordinate लिखना है, so we'll just write down the x coordinate. So for p, x is equals to minus pi upon 9, and for q, x is equals to positive pi upon 9. Okay. Now part 2. Part 2 says find the exact area of the shaded region. 6-mark question. You must show all your working. Okay. So this is the final question that we're going to solve. ठीक है, and then इसके बाद we'll call it a day, and then we'll meet again inshallah at 7:30 right after Maghrib. Because in positive 2 quadrants, what if you look at exactly, देखो इसके लिए you don't need to look at the other quadrants, which is why it's important to keep the shape of the curve in mind. Alright, it's important to keep the shape of the curve in mind, and if you're not going to keep the shape of the curve in mind, then you're going to make that mistake. So if you look at the curve over here and the curve that I've drawn, so you can see that this is basically the first value. Take it, this is only the first value. Okay, it's not the value that you will get later on. Okay, honey, I hope I have answered your question. Okay, now again, I need some help. I want you guys to tell me, okay, how will I find out the area of the shaded region? Okay, tell me what to find first and what to get rid of and all of that quickly. Area under the graph with pi upon 9 and minus pi upon 9, ठीक है, minus the area of square. ठीक है, you're right, except we don't know whether it's a square. In fact, we know it's not a square. ठीक है, so minus the area of rectangle. ठीक है, perfect. So basically what we have to do is we have to do area under the curve. Area under the curve minus area of rectangle. ठीक है, और area under the line. ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, I will not recommend that you integrate the line. I will instead suggest that you find the area of the shape. ठीक है. Okay, so for area under the curve is going to be this red part. ठीक है, so whatever I'm doing in red is for area under the curve. And whatever you guys see in this blue is basically area of rectangle. Okay, now let's find out the area of rectangle first, okay, because that's going to be a pretty straightforward job. क्या ख्याल है?
सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए ये हमारी एक लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये लेंथ क्या होगी, पाई अपॉन 9 माइनस पाई अपॉन 9, ठीक है, विच इवेंचुअली बिकम्स 2 अपॉन 9 पाई, ठीक है। पाई अपॉन 9 प्लस पाई अपॉन 9 विच इज़ 2 अपॉन 9 पाई, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गोइंग टू बी 2 अपॉन 9 पाई। सो लास्ट वीक आई टोल्ड अच्छा ये मैं आपको मैसेज ज़रा बाद में पढ़ता हूँ, फर्स्ट लेट मी गेट थ्रू दिस। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गोइंग टू बी 2 अपॉन 9 पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ ओवर हियर, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी 5 into 5, so that's 10 upon 9 pi, ठीक है। इसको साइड पर रख देते हैं। Now let's focus on finding out the area under the curve. Okay, how will I find out the area under the curve? Area under the curve will be integrated, we'll integrate 4 plus 2 cos 3x। जल्दी से मुझे बताओ cos का इंटेग्रल क्या होता है, ठीक है, within the limits pi upon 9 and minus pi upon 9, ठीक है। सो क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द इंटेग्रल ऑफ cos 4 का इंटेग्रल तो 4x हो जाएगा, दिस आई विल फिल अप लेटर वंस यू गाइज आंसर दैट। सो पाई अपॉन 9 माइनस पाई अपॉन 9। सो आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम कॉम्पिटेंट टीचर। ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दैट। ओके, cos का इंटेग्रल इज, देखो साइन का डिफरेंशियल होता है cos, ठीक है, cos का इंटेग्रल पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, इट्स नॉट गोना बी माइनस साइन, इट्स गोना बी पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो दिस इज गोना बी 2 साइन 3x अपॉन 3, ठीक है, यस परफेक्ट। सो लेट्स राइट दिस नाइसली, हो जाएगा 4x प्लस 2 अपॉन 3 साइन 3x विद इन द लिमिट्स पाई अपॉन 9 एंड माइनस पाई अपॉन 9। नाउ लेट्स प्लग इन द लिमिट, ठीक है। So 4 into pi upon 9 upper limit plus 2 upon 3। अच्छा अब ये ना मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट वर्किंग आउट साइन 3 into pi upon 3, 3 into pi upon 3, ठीक है, सॉरी 3 into pi upon 3 नहीं, 3 into pi upon 9, माई बैड। ओके, तो 2 upon 3 और ये हो गया हमारा √3 upon 2। इसको अगले उसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। I'd like you guys to keep checking this simultaneously ताकि टू मेक श्योर कि मैंने इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर ना कर दिया, ठीक है। अच्छा, -4 इंटू माइनस पाई अपॉन 9, ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन 3। अच्छा ये भी मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, ठीक है, साइन 3 इंटू फ्रैक्शन माइनस पाई अपॉन 9। ओके, तो ये आ गया हमारा minus under root 3 upon 2. Okay, now we're going to do a bit of simplification. In fact, not a bit, quite a lot of simplification. So 2 और 2 cancel हुआ, ठीक है। 4 pi upon 9 plus √3 upon 3, सही है। इसको ब्रैकेट में डालो, माइनस लिखो, -4 pi upon 9, सही है, माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, √3 upon 3, okay। Now let's see what happens. What happens next is के 4 pi upon 9 plus √3 upon 3 plus 4 pi upon 9 plus under root 3 upon 3. Okay. Now 4 pi upon 9 plus 4 pi upon 9 is going to be 8 upon 9 pi. ठीक है, √3 plus √3 is going to be 2 under root 3 upon 3. ठीक है, hopefully we're on the right track. अच्छा, फिर इसमें से हमने क्या, now that we have everything, we just need to subtract area under the curve. और उसमें से हमने क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो दैट आई एम गोना डू इन विद ब्लू। सो 8 upon 9 pi प्लस 2 under root 3 upon 3 minus 10 upon 9 pi. Okay, let's see what do we get. 8 minus 10 तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, 2 under root 3 upon 3 minus 2 upon 9 pi. There you go. इसको हमने माइनस कर दिया, 8 minus 10 is -2. And that's it. That's our answer. Okay. So what are your thoughts on this question? Pardeen, yes Pardeen, I know I didn't attempt your question. ठीक है. Question it says find the exact area of the shaded region. So exact का मतलब कि आपने इसको exact form में ही रखना है, ठीक है। Please note, if the question has used the word exact like it has over here, to make sure that you leave your answer in exact form, ठीक है।
Okay, now what are your thoughts about this question? आसान था, मुश्किल था, क्या था? What are you gonna say? Yeah, I think it was easy. I would agree that yes, it was easy. Yes, definitely easy compared to the previous one. You're right. Sir, why didn't you take the LCM in area under the curve? I could have done that. I could have taken the LCM, ठीक है, but नहीं लिया. कोई हर्ज की बात नहीं अगर आपने नहीं लिया. ठीक है. Okay, now चलें, so that's about it guys, and I will inshallah see you guys in the next video. Next topic कौन सा करें? What do you guys suggest? Give me suggestions for the next topic. देखो, if the question has said give the answer in exact form, which it did, then you have to give your answer in exact form. ठीक है? Decimal form is not acceptable. Okay, I'll run a poll on my Instagram. ठीक है? I know both topics are quite challenging, permutation and combination, as well as kinematics. Yes, I know. Both of them are challenging. ठीक है? But the thing is, obviously I can only do one in one live stream, so I'll run a poll on my Instagram. You guys can answer there, and we'll see. Acha Moiz, what's your question, beta? Moiz, I don't know what your question was. Acha khair. Anyway, so I'm gonna stop here. See you guys inshallah in the next class. Take care. Remember, tonight we're doing math key stream, and we're gonna be covering mensuration. We're gonna be doing some really difficult questions of mensuration, so make sure to tune in. Integration, beta. This was just integration, Iman. Sir, is the method of integrating both in upper lower correct? I don't understand what your question is. I don't understand what your question is. So please guide me how to prepare maths. But I can't do that over here. ठीक है, I'd love to guide you. I'd love to help. Drop me a message on Instagram. I have a whole video जिसमें आप syllabus को मैंने break किया हुआ है. You can use that, follow that, and that will help. ठीक है. चलो, I'll run a poll on my Instagram and we'll see कि next topic कौन सा stream करना है. So I'm gonna stop here, guys. Like the stream before you go if you haven't yet, and do subscribe again if you haven't. So see you guys tonight, hopefully, math की class में, doing permutation. So take care. Love.